Hi, good morning, ohayo gozaimasu, namaste. I'm Chef Kumar from Tokyo, Japan. आज हम बनाने जा रहे हैं हमारा आपका सबका बटर चिकन फेवरेट। आज मैं आपको शेयर करूंगा रेस्टोरेंट स्टाइल का बटर चिकन आप घर में कैसे इजी एंड क्विक बना सकते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। थैंक यू। मैंने लिए हैं 3 बड़े टमाटर जो अराउंड 500 ग्राम है, चिकन बोनलेस 400 ग्राम, हाफ पीस अनियन, 30 पीस ऑफ cashew nuts, fresh ginger, fresh coriander, butter, desi ghee, yogurt for marination, fresh cream, 1 dry chili, 1 cinnamon and 6 pieces of green cardamom. So चलिए स्टार्ट करते हैं। First we marinate the chicken. To marinate chicken, we need the garlic, ginger, 1 tablespoon lemon juice, 1 teaspoon paprika, 1 teaspoon coriander, 1 teaspoon turmeric, 1 teaspoon garam masala, 1 teaspoon cumin powder, little oil and yogurt. Now we leave it for 30 minutes. First we cut the onion, julienne. And then tomato, rough cut. बनाने के लिए हम 60 ग्राम देसी घी डालेंगे पहले। One red chili, 1 cinnamon, 6 pieces of green cardamom, 30 pieces of cashew nuts, 1 green chili spicy, 1 ginger and saute. Now I'm going to add half onion slice, fresh coriander and saute. You can feel the fragrance is very good coming. आप खाने के बनाते खुशबू से ही आप पहचान सकते हैं कि हमारा खाना कैसा बन रहा है, अच्छा है, क्या कमी है। तो खाना बनाते समय हमें फीलिंग भी खाने की आनी चाहिए कि हम क्या बना रहे हैं। I'm going to add tomato. I'm going to add half teaspoon paprika powder, half teaspoon coriander powder, half teaspoon cumin powder, half teaspoon turmeric, 1/4 garam masala. Now I'm going to add 50 cc of water. And just cover. Wait for 10 to 15 minutes. After 10 to 15 minutes, tomato is cooked and now soft. We close it
We make it cool down first, then we will make a paste of it. Now we are going to cook our chicken tikka almost 30 minutes marination. First I add the 2 teaspoons of oil. एंड कवर. अगर कवर करके रखेंगे तो हमारा जो चिकन टिक्का है वो जूसी रहेगा. देन वी कैन कुक इट फॉर स्लो फ्लेम. You can see the color is already one side. Now we turn the chicken. Now we cover it and wait. After cool down the paste, we are going to make a paste now. Now our gravy is already grind. Now it's time to stain it. Now the butter chicken gravy is ready. Now we do the chicken tikka. Now the chicken tikka is already cooked, juicy. Now I'm going to add our butter chicken sauce. Kasuri methi. Green cardamom powder. Salt, garam masala, and leave it for 10 to 15 minutes. Now butter chicken is ready. Now I'm going to add a sugar, 1 tablespoon. 60 cc of fresh cream, 60 gram of butter, and now I cook it for 5 minutes only. Looks very yummy, creamy, authentic butter chicken. Now butter chicken is ready. Now it's time to serve.